Hey guys, how are you all? Welcome to our YouTube channel Indian World Lost Bar, and today we are going to make reaction on is it time to buy in or cash out on Nvidia. So let's watch. And Microsoft closing the week back on the throne as the most valuable company. Microsoft competing with Nvidia and Apple recently, with many wondering who will hold on to the top market cap spot. For more on what investors should भाई साहब इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट का $3.34 जो बिलियन डॉलर होता है ना, इतना रह गया है। और दूसरे नंबर पे एप्पल। चलो देखते हैं। be looking for in the tech sector. We're bringing in Ivana Delaveska, founder and CIO of Spear Invest. So lay it out for us here. Thanks for having me. आपको क्या लगता है कि बाय इन करना चाहिए या फिर कैश आउट करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? We think that mega caps drove the first leg of this upturn this year. And as we get into the second half, we think the upturn will broaden to mid-cap stocks. So that's where we're really looking most for opportunities. We still like NVIDIA. We still see a lot of upside, but we don't think it's going to be as outsized of a performer compared to the rest of our portfolio as we look into second half. So why do you think that that is the case? सही कहा बिल्कुल। तो एनवीडिया की यार मुझे तो ऐसे लगता है अभी तो डाउनफॉल चल रही है, मतलब डाउन जा रहा है, पर बाय इन करना भी अच्छा है क्योंकि मुझे लगता है अचानक से ही ऊपर जाएगा। So if you look at valuation, within the mega cap sector, we've seen valuations actually expand. So while the recovery has been driven mostly by earnings, by now we're starting to see some valuation expansion as well. On the mid-cap side, we're actually, like within the software space, for example, we are actually seeing multiples close to the bottom of 2020 and 2022 when we really saw interest rates spike and the whole tech sector collapse. So multiples are still pretty depressed in that space compared to mega caps where they don't look expensive, but they're definitely much more reasonable. सही कहा यार। और दूसरी बात ऐसी है, जिन्होंने पैसा लगाया होगा अब डाउन जा रहा है, पैसा दिल हाथ में आ गया होगा उनका। It's like a risky thing for them, but yeah, it's fluctuating always happen. Could you tell us some names here, these mid-cap names in software that you're looking at, and why you think software has been lagging the semiconductor space over the last few months? So first of all, it does make a lot of sense that cyclicals usually lead us out of a downturn. So that's where you're going to see the first investment take place. You first need to invest in hardware, and this, as you get further into the cycle, you're going to be investing in applications and tools, and that's where you really use the software to build these applications and tools. So we would expect a lag usually to occur of like 6 months to almost a year sometimes, but it has been actually very unusual, and it is driven by interest rates trickling up, that valuations have been really impacted in the software space. So the key will be to see the 10-year stabilize at a level. It doesn't really matter if it's 3.5%, 4%, or 4.5%. The key is for it just not to keep moving up. Exactly, and continue to create a headwind. So as soon as we see this stabilize, that will provide a good floor for the software stock valuation, and then it's going to come back to earnings. And then specifically about sectors, cybersecurity is one space that we're particularly excited about because fundamentals are really improving by the day. You're hearing of cyber attacks and ransomware pretty much on a daily basis. साइबर सिक्योरिटी है, इस वजह से हम ऐसे बैठे हैं, नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। आजकल सारा जमाना ही ऑनलाइन है, सारे स्टॉक खरीदने हैं, ऑनलाइन करना है, सब कुछ। So thank you, cybersecurity. Cases of large companies getting affected. So that's the area that we're mostly focused on. I want to get your reaction to a note that we talked about earlier, which was a downgrade of Palantir that talked about the analyst called it a gluttonous valuation, but also said that software is maybe not going to see this strength that you're talking about, in part because the Gen AI revenue huge increases for software आपको क्या लगता है कि सॉफ्टवेयर वगैरह बाय करना चाहिए या नहीं ये ट्रेडिंग और स्टॉक वगैरह के लिए? क्योंकि आजकल रोबो ट्रेडिंग भी चल रही है, आपको पता ही है हर तरह की, और कई लोग आगे भी गए हैं, कई लोग खुद ही ऐसे कह देते हैं, खुद ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, कहते हैं कि ये रोबो ट्रेडिंग है भाई साहब। तो रोबो मतलब हाँ, ऐसे ऑटोमेटिक वाला जो सीन चल रहा है ना, एक QFX की ट्रेडिंग भी चलती है स्थायी। तो आप भी बताओ यार, फॉरेक्स ट्रेडिंग और अलग अलग चीजें जो भी हैं, आप कौन सी वाली कर रहे हो, कमेंट में बताओ। really materialize. And I'm just curious to get your thoughts on that.
Well, the revenues haven't really materialized because of the lag that I was talking about before. So I think it's really going to take some time for companies. Right now, all of the investment is on the hardware side. So you see all the hyperscalers invest billions of dollars just in the hardware itself. As companies build the applications, that's when you will see the impact on the software side. I think there is a lot of thesis as the stocks haven't performed as well. A lot of people are talking about, well, will Gen AI replace all of these software tools? No, that's not how it works. You really can't build anything without cybersecurity protection, right? You really can't build anything without some of these data infrastructure tools and access to LLM models. So all of these are really important tools. They're just gonna see the impact a little further into the tech recovery cycle. Anything further हाँ downstream? ये तो सही कहा, साइबर सिक्योरिटी और सारा कुछ, ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट है भाई साहब। ऐसे इनके बिना हम ऐसे रिस्क रिस्क लेना चाहिए लाइफ में, पर ऐसे माइंड ओपन करके लेना चाहिए ना, ऐसे ही नहीं कि में ही ज्यादा ही रिस्क ले जाओ, बाद में ऐसे हाथ जोड़ के बैठे हो। That you wouldn't make an investment in right now, but you're thinking, all right, in 3 years, let's take a look at this, a longer investment thesis. So absolutely, the application layer would be the furthest out. So first we're seeing the hardware, then you see this middle layer of infrastructure, which is cybersecurity, data infrastructure. That's where we're looking to invest in for the next year. And then as you look further, you're going to see the application layer, which is actual applications. The public-facing stuff that we know. That's right. That's right. So this would be like beneficiaries would be companies like CRM systems that provide tools maybe that will optimize your sales force. It could be companies like Tesla that offer robots or autonomous driving. So all of these are applications of AI that have not really gained scale and are still in a little bit in a proof देखो of मैंने concept. रोबो के बारे में पहले ही कह दिया है, और जैसे कि इन्होंने रेकमेंड किए हैं बहुत सारे, रेकमेंड नहीं किया, उनके बारे में बताया है कि ऐसे ऐसी कंपनी चल रही है भाई साहब, जैसे कि रोबो ट्रेडिंग हो गया है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट robots and many more. So Stage. Yeah, that's really interesting. I can say anecdotally, it makes a lot of sense that they haven't seen the productivity gains yet. And Salesforce, Tesla, maybe in 3 years, get that boost. Ivana, thank you for dropping by here. अब बहुत ही मतलब कि अच्छे से उन्होंने बताया, क्योंकि वो प्रोफेशनल है इस चीज़ में, बहुत टाइम से ऐसे ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में अंदर है, इसके अंदर है वो। और दूसरा बात करूँ मैं, याहू फाइनेंस की ये वीडियो है भाई साहब, ओरिजिनल कंटेंट है, क्योंकि अगर आप देखना चाहते हो, इफ यू वांट टू वॉच ओरिजिनल वीडियो, देन आई विल पुट ओरिजिनल वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो ओवर देयर एंड वॉच। एंड अदर थिंग इज कि अगर आपका इंटरेस्ट है ना ट्रेडिंग में, पहले तो इंडिया में और डिफरेंट कंट्रीज में, अमेरिका में, चलो अमेरिका में तो ट्रेडिंग का बहुत पहले से ही आ गया था मामला, बट आजकल जो मतलब हमारी साइड इस तरफ, इवन की साउथ एशिया में भी, तो ट्रेडिंग का मतलब अभी अभी इतना हो गया है। आजकल के जो कॉलेज के बच्चे हैं ना, कॉलेज के स्कूल के, उनके अंदर भी ट्रेडिंग का एक इंटरेस्ट पैदा हुआ है, और इस इंटरेस्ट को होना भी चाहिए, क्योंकि भाई साहब अगर हम नॉलेज लेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छी है। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो और अगर आपको ट्रेडिंग की नॉलेज है, आप यूट्यूब के अंदर भी डाल सकते हो और दूसरा ऐसे लोगों को टीच कर सकते हो जो आपके अंदर है। और आजकल बच्चे कुछ हट के सीखना चाहते हैं, और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि वो ट्रेडिंग सीख रहे हैं भाई साहब, और टीचरों से, और जो टीचर लोग होते हैं भाई साहब मोटा पैसा ले रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग, अगर आपके पास टेक्निक है ना, वो टेक्निक को आप ऐसे ही यूं ही बता दोगे तो अच्छी नहीं लगती, तो उसका आप कदर करो। अक्षय कुमार भाई साहब ने भी कहा है कि अगर आप ट्रेडिंग या कुछ भी, मतलब आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, उसको फ्री में ऐसे ही जाया मत होने दीजिए, उसकी कदर कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। आपको कितने साल गए हैं ये चीज़ सीखने के लिए, और आप किसी को भी ऐसे फ्री में दे रहे हो तो वो बंदा भी कदर नहीं करेगा। इसलिए अगर आपके अंदर ट्रेडिंग की नॉलेज है, स्टॉक मार्केट जो भी आपको है, उसको आप बताइए, और ये अपॉर्चुनिटी भी है बिजनेस के लिए कि आप लोगों को सिखा सकते हो और बता सकते हो, और आगे जो बंदा सीखेगा वो भी आगे ऐसे काम कर सकता है, क्योंकि स्टडी करके या स्टडी के लिए ट्यूशन भी तो रखते हैं ना। अगर हम बिजनेस करना है, उस बिजनेस के एक्सपीरियंस लेने के लिए भी हमें ट्यूशन क्लास तो लेनी ही पड़ेगी। अगर ऐसे ही करेंगे तो भाई साहब, तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि लॉस खा करके बैठ गए। तो इसलिए एक्सपीरियंस बंदे के साथ जुड़ करके आप आगे जाइए। और आप क्या सोचते हो कि बाय इन करना चाहिए एनवीडिया को और कैश आउट करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी बाय इन आई थिंक, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर।
So guys, don't forget to watch your Yahoo Finance original video, and also if you are new to our YouTube channel, don't forget to subscribe and like and as well as share this video. Thank you very much. Bye bye.